language will also be for that single occurrence. So that means this is such a language which is going to take only one input symbol A, not other input symbol. Okay. So only A will be its valid input string that this language will allow to pass on. Okay. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि अगर आपको इनपुट स्ट्रिंग दे दिया गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी में अभी दिखाया कि अगर आपको ये इनपुट स्ट्रिंग दे दिया गया है तो आप कैसे उससे इसका फॉर्मूला निकालोगे, स्पेसिफाई करोगे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, या फिर अगर आपको ये लैंग्वेज दे दिया गया है, मतलब ये फॉर्मूला दे दिया गया है, तो वहां से आप कैसे जनरलाइज करोगे कि व्हाट विल बी इट्स वैलिड इनपुट स्ट्रिंग. ओके, सो वाइस वर्सा इज पॉसिबल. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रूल्स. सो वी विल सी that if rules is written in this fashion, then how your input string will look like following this rule. Okay. So यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि you have two regular input symbol. One is R and another input symbol is S, and their occurrence value is 1, मतलब single occurrence. Okay. So R से जो regular expression create होगा that we will write as L of R. Similarly S से जो language create होगा that we will specify using L of S. और दोनों के बीच में अगर पाइप ऑपरेटर है, देखो R ऑब्लिक S दिया हुआ है ना, तो अगर दोनों के बीच में पाइप ऑपरेटर है then we will say that my language by which I am describing this regular expression, so that is going to utilize the concept of union operation here. Okay, so R oblique S का मतलब है if you are specifying using this regular expression R and you are implementing them in your language L, so L of R union L of S का जो resulting value होगा that you are going to support. Okay, so union मतलब either there will be single occurrence of R or there will be single occurrence of S, not both. Okay. Next, if you are utilizing R followed by S, like here R followed by S, so this means that this is a series connection. So what I mean to say is that the previous one which was talking about R oblique S, इसका मतलब इन दोनों में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है एक पैरेलल कनेक्शन. सो दिस इज योर सिंगल R, this is your single S, right here. This is your single S. Now, when you will start from a state, suppose initial state से आपने start किया है I. Okay, so either via R you can reach to your goal state or final state, or else you can opt for some parallel path by taking the input symbol S. So this is its meaning. Okay, R oblique S means you are availing any one path from your initial stage to final state or goal state. Okay, that we represent using concentric circle, right? अगर यही चीज अगर R डॉट S बन गया, जो मैंने अभी कहा कि concatenation, this is the concatenation ना, जो highlighted है R followed by S, this is the concatenation. So concatenation में क्या होता है कि you utilize the concept of series. So that means you have started from your initial state I, then your first symbol will definitely, that will be R, then followed by the second symbol will be S. S के बाद ही वो आपको फाइनल स्टेट पे लेके जाएगा. Okay. Anyone is having any doubt?
ओके सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि यहाँ पे जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को आपने यूटिलाइज किया है, वहां पे आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर बोल के दे रहे हो कि आर से बना जो लैंग्वेज है दैट इज गोइंग टू कम फर्स्ट, देन ओनली योर एस का जो लैंग्वेज है दैट मे कम, बिकॉज it is a series connection. So series connection में your prior term you are mentioning as R, then posterior term you are mentioning as S. So this is called R followed by S or R concatenated with S. Okay. So यहाँ पे आप अगर SR बोलोगे, so that will be a different one. These two are not going to be same. Okay. Because here the preceding term is your R and here your preceding term is S. So this is not same. Okay. It's not commutative. Okay. So that means in this case, you will denote your whole language by LR followed by LS. So the language which is following the input symbol R, then you are starting the language which is utilizing the input symbol S. Okay. So this is your concatenation operation. Similarly, this next rule is saying about R star. So that means you are trying to formulate such a language which is taking 0 or more occurrence of your input symbol R. So suppose your R value is. Anyone is asking anything? Okay. So what I was telling, suppose you are utilizing the R as 1 here, okay, and you are writing L of R star, L of R star. So that means inside the bracket you can have 0 or more occurrence of your R value. So here R value is 1. So if it is 0, so that means there is no anyone. So your epsilon will be the member, because inside the bracket there is no any symbol of R. So 0 occurrence or null occurrence followed by 1, because R value is 1. So single occurrence of 1, then double occurrence of 1, then triple occurrence of 1, dot dot dot, you have multiple occurrence. Dot 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 करके 1 to the power n. So all are allowed. Okay. In this LR star. So LR star में आप null को भी include करते हो. Okay. Similarly, if you write LR positive, you write like this, LR positive. Okay. So LR positive में it is almost similar to this set which I have just mentioned, but यहाँ पे ये epsilon हट जाएगा. So that means 1 or more occurrence of your input symbol. So your input symbol R यहाँ पे 1 है, तो 1 or more occurrence मतलब at least एक occurrence of 1 का होगा ही. So single 1, double 1, triple 1, dot dot dot, you have n number of 1 is allowed in your language. Okay, whichever language you are using, and you are saying that R positive. So R positive excludes the null symbol. यहाँ पे जो आपने epsilon में जो null symbol जो दिया था ना, star key closure, इसको हम लोग key closure भी बोलते हैं L star को. So वो चीज जब हम लोग positive closure use करते हैं वहाँ पे missing होता है. Just wait 1 second. Okay, so if you are utilizing positive closure, then you will have to definitely take care that you are not going to take any null input symbol in that particular input string set. Okay. Similarly, you have key enclosure, I have told.
positive closure I have told, and single also I have told. And apart from that, we can have any exponential also value possible. So in that case, you will write suppose n to the power I. So in this case, suppose if I value is 2, so that means, or you are writing not like this, you are writing LR to the power I, you are writing. Because you are not like writing like this, you are writing LR to the power I. And I value suppose 2. Okay. So that means whatever regular expression will be coming in your R, so always that will be coming in a even number, because suppose your R is, the input symbol is A. Input symbol is A. Okay. So that means every time you are going to have its even occurrence, A square or A4 or A6. So that means multiple of 2 will only work, because you have mentioned that your I value is 2 here. Okay. So every time you will collect your A, you will not get any of its odd occurrences, because I value you have mentioned here as a 2. Okay. If you mention as a 3, so in a multiple of 3 it will occur. So likewise, we utilize these rules, that is concatenation, and then your series, your clean closure, your positive closure, or your exponential values of your input symbol. In fact, we can utilize the concept of intersection also. So in that case, we mentioned, like I have shown that union portion, we mentioned, suppose we have two different languages and between them, the common part only should be taken. Okay, so L and M are two different languages. So only the common part will come into our resulting value. Okay. The resulting language will only support the common part. So these are some rules that you are going to utilize when you are trying to specify the tokens, okay, using regular expression. So in this section, what type of question will come, that I will show you. Suppose writing a question. I hope everybody can see this font size. Consider language part, which is in the input symbol, and you have another language, suppose L of S, made from B, and you have a third language which is U, taking the input symbol called suppose C, or null, anything. Okay, then you are being asked to write the languages. You are being asked to write the regular expression the following
languages. Option is given. You have to write a language for R oblique S, small r oblique S. Next, you have to write R oblique U. Next, suppose C it is given S oblique U. R oblique S अगर आपका regular expression है, so that means definitely we'll write instead of LR, we will write like this. पहले हम लोग A वाला solve करते हैं, हाँ? You are asked to write the language, हाँ? तो डेफिनेटली आप R की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस करोगे R oblique S. तो अगर ऑब्लिक है, मैंने अभी प्रीवियस बोर्ड में आपको बताया, ऑब्लिक का मतलब होता है कि पैरेलल कनेक्शन, राइट? ये यहाँ पे मैंने अभी बताया ना, ये वाला पैरेलल कनेक्शन. सो पैरेलल कनेक्शन मतलब आप बेसिकली यूनियन ऑपरेशन कर रहे हो एंड यू आर बीइंग गिवन इनपुट सेपरेटली लाइक दिस. ठीक, सो इसका मतलब यहाँ पे आपका एल आर के साथ एल एस का यूनियन ऑपरेशन हो रहा है. तो एल आर और अगर यूनियन ऑपरेशन हो रहा है, सो सेपरेटली एल आर का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि सिंगल ऑकरेंस ऑफ ए, सो योर ए विल बी देयर और उसके साथ आप यूनियन करोगे. सो दैट मीन्स ए इज अ सेट एलिमेंट, तो आपको कर्ली ब्रेसेस पे देना चाहिए. तो आप यूनियन करोगे एलएस में जो मेंबर्स है. सो एलएस में मेंबर कौन है, बी इज द मेंबर. सो ए यूनियन बी मतलब एनी स्ट्रिंग which consists of a single occurrence of A or B. So this is the answer. So similar fashion, these two also you will do. R और U U है मतलब A और C से बनेगा, S और U है मतलब B और C से बनेगा string. So likewise, you will be asked to create the languages who follow these regular expressions. Okay. Next, एक कॉन्कैटिनेशन का देख लेते हैं कि अगर आपको बोला गया, लेट्स से सेम क्वेश्चन, सपोज है आपके पास एल आर है, एल एस है और एल यू है और आपको कहा गया कि यू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपको लैंग्वेज दिया हुआ है आर डॉट एस. डॉट एस हम लोग डॉट नहीं देके हम लोग नॉर्मल आर एस भी लिख सकते हैं, आर एस इस तरीके से. तो जैसे ही मैं आर एस लिखूंगी इसका मतलब दिस विल फॉर्म अ सीरीज कनेक्शन. ओके, सो अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ये बना, राइट हियर एल ऑफ आर एस, मुझे तो लैंग्वेज बताना है उसका, रेगुलर एक्सप्रेशन है आर फॉलोड बाय एस, सो दैट मींस दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज कनेक्शन. ओके, सो एल ऑफ आर followed by L of S. I cannot alter its sequence, huh? In series, whichever is the preceding term that will remain first, और उसका जो language जो होगा that will be kept first, followed by the second one. That means यहाँ पे followed by S. So language which support this regular expression S that will come later on. Okay. So इसका मतलब यहाँ पे जो input string बनेगा, फर्स्ट एल आर में एलिमेंट है ए, सिंगल ऑकरेंस ऑफ ए, उसके साथ फॉलोड बाय सिंगल ऑकरेंस ऑफ बी, सो दैट वी आर गोइंग टू गेट अ इनपुट स्ट्रिंग ऑफ ए. तो ये जो है इस लैंग्वेज के थ्रू पास कर सकता है बिकॉज दिस इज सपोर्टिंग दिस रूल. नेक्स्ट, अगर यही चीज आपको कीन क्लोजर या फिर पॉजिटिव क्लोजर या फिर
एक्सपोनेंशियल में अगर आपको दे दिया गया या फिर कॉम्बिनेशन में आपको दे दिया गया, देन हाउ यू विल राइट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको दे दिया गया एक क्वेश्चन, our language LR who is supporting a language which is made up of single occurrence of input symbol A, and you have another language supporting the input string, a single occurrence of input string B. और आपको बोला गया कि utilizing these two conditions, you write a grammar for the following regular expressions. You have to write for regular expression R star. Okay, so R star मतलब R star, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. R star, देन आपको सेकेंड सिचुएशन दिया गया है कि R फॉलोड बाई S, उसका होल स्टार. थर्ड सिचुएशन आपको दिया गया है, you have to write a regular expression for oblique S, गया है, या फिर देते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब you have a situation that R oblique, and यहाँ पे सीरीज में हम 2S दे देते हैं, and then we will write whole star. So these four situations are given to you, and you are being asked to write the regular expression by keeping in mind that you are only available with these two things. You have a information about LR and you have a information about LS. Now you are being asked to create LR star, LRS whole star, LR oblique S whole star, and LR oblique SS whole star. Okay, you are being asked to create these scenarios. Okay, so first I will show you how to write LR star. LR स्टार मतलब यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स आपके यूटिलाइज होंगे. दिस इज अ कीन क्लोजर कंडीशन, राइट. सो कीन क्लोजर में जो भी आर यहाँ पे अवेलेबल होता है, मतलब जो भी इनपुट सिंबल यहाँ पे अवेलेबल होगा, उसका 0 और मोर ऑकरेंस विल बी एंटरटेन्ड. Okay, so zero occurrence means I have already told that you have to use the epsilon symbol as a one of the member. Okay, so let me insert epsilon first. So epsilon will be one of the member. उसके बाद आप जितना भी उसका occurrence आप उसको दे सकते हो. Occurrence of A, because R value is A here. Okay, double occurrence of A is also allowed. Triple occurrence of A is also allowed. 4 occurrence of A allowed, and so on. Okay, so I will write A, then dot 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 dot, because many occurrences are allowed in case of your key inclusion. Okay. Next, if I talk about the second part, that means you have a series connection inside the bracket, and then you are being asked to find out its key inclusion. So that means you are being asked to find out the regular expression of RS whole star. Find out this. So in that case, that means यहाँ पे जो symbols अंदर है, bracket के अंदर है, उसमें preceding term होगा A, because R is supporting A input string, and S is supporting your B input string. So जब भी आएगा इसका मतलब AB या फिर A followed by B, बाद में फिर B आ सकता है, but starting will always be A. लेकिन यहाँ पे एक आप डुअल सिचुएशन भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम्स है, any of these items can be null at any point of time because you are dealing with key inclusion. So that means here either this R can be null also, in fact S can be null also. So that means inside the bracket, though you are seeing here that you have two items R and S, but any one of them can be null at any point of time because key enclosure's definition says so.
कीन क्लोजर जहां पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे उसका नल कभी भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे हमने देखा कि ए का कोई भी ऑकरेंस नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी हैव पुट हियर एप्सिलॉन। सो सिमिलर फैशन अगर वही सेम रूल हम यहाँ पे लगाने जाए तो एनी A and B, any one can be null at any point of time. In that case, the other will only be present there. Okay. So what I mean to say is that here only epsilon to allow है ही इस सेट में occurrence of A, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि B's occurrence is null. So single occurrence of A is allowed. Single occurrence of B is also allowed. हम लोग मान के चल रहे हैं कि R is null. ओके आर अगर नल है तो नल फॉलोड बाय एस, मतलब ओनली सिंगल ऑकरेंस ऑफ बी, दैट आल्सो यू कैन अलाउ। इनफैक्ट दोनों का सिंगल ऑकरेंस ए बी, दैट इज आल्सो एन अलाउड स्ट्रिंग हियर, या फिर सिंगल ऑकरेंस ऑफ ए फॉलोड बाय मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ बी, दैट इज अलाउड। multiple occurrence of A followed by single occurrence of B or multiple occurrence of B, that is allowed, and so on. So these are some of the combinations which I have written, that these kinds of strings are allowed when you will opt for such kind of regular expression for specifying the tokens. तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपाइलर के पास अगर इस डिजाइन का कोई इनपुट स्ट्रिंग आया, okay, so it will try to match these strings with this stored regular expression. It will try to specify using this regular expression जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे लिखा है। अगर कोई भी इस टाइप का स्ट्रिंग आया जो प्रीवियस केस में मैंने दिखाया, सो वो उसको समराइज कर देगा बाय स्पेसिफाइंग इट यूजिंग दिस रूल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली अगर मुझे आर ऑब्लिक एस होल स्टार लेना है, ओहो सॉरी सर, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है कि अगर मुझे R फॉलोड बाय S लेना है तो यहाँ पे कभी भी এখানে কি এবি ম্যাম এবি बोलो। এবি এরকম করে স্ট্রিংটা আসবে ম্যাম, এখানে স্ট্রিংটা এবি এবি এরকম করে আসবে তো? राइट राइट राइट, ওখানে আমি একটা জিনিস ভুল করেছি যে यहाँ पे सीरीज को मुझे ऑलवेज मेंटेन रखना पड़ेगा। सीरीज मतलब मतलब ऑकरेंस का ऑर्डर। सो यहाँ पे ए बी इज अलाउड फाइन, लेकिन यहाँ पे ए डबल बी आना कभी भी नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम आई एम टेलिंग दैट बी विल बी फॉलोड बाय ए। तो यहाँ पे ए बी कैन बी देयर। इनफैक्ट यहाँ पे भी दिस थिंग आई हैव मेड मिस्टेक, सॉरी। Moitri, you have said, Moitri said, no? Yes, ma'am. Yes, Moitri has said correctly कि whenever in series you are mentioning any regular expression, that series you will have to mention. So that means you have to maintain this. So A followed by B. Again, if any A is coming, followed by B. Again, if any A is coming, followed by B. या फिर A is coming, then it should be followed by B. So likewise, every time you will get the occurrences, so this AB will come as a single block. AB will come as a single block. Okay, but what I said is कि अगर आपको चाहिए कि आपको followed by B नहीं होने से भी चलेगा, मतलब जो उसका नेक्स्ट केस है R oblique S. Oblique S में you are free to choose the number of occurrences. Like here you either the ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसके इनसाइड में जो एलिमेंट्स है वो नल हो सकता है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर एप्सिलॉन सिंबल, या फिर उनमें से कोई एक भी ओमिट हो सकता है, बिकॉज दिस इज सपोर्टिंग पैरेलल कनेक्शन। सो मेरा अगर डायग्राम में आप देखते हो, so डायग्राम में क्या था कि either by following this path you can go to your goal state, or by following this path also you can reach to your goal state. Okay, but in this case, if you are trying to reach from your starting state to goal state, you have to definitely follow this path. And in this path, first your R is deciding, then your S is coming. So every time you are following this path, you will have a combination of RS, RS, RS and so on. So यहाँ पे भी अगर हम उसके साथ अगर मैच करवाते हैं अपने इनपुट स्ट्रिंग को, so यहाँ पे ये A और सिंगल
B, this will never occur. Okay. Either AB or any multiple occurrence of AB will occur. मतलब यहाँ पे जैसे देखो ये AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर, ये है AB4, one time AB, second time AB, third time AB, fourth time AB. So every time it will have to reach to its goal state, it will have to follow this order. So these strings are valid string. But in this case, when you are talking about LR oblique S, there you are free to choose the path for reaching from your initial state to final state. So in this case, this single occurrence of A या फिर single occurrence of B या फिर एक single occurrence followed by your single occurrence of B, this all are allowed. A, B, B. Okay? Because यहाँ पे जब आप स्टार दे रहे हो, स्टार मतलब you are creating one loop here. Okay, so मान लो कि A, B, B अगर आपको चूज करना है, so this is your A and this is your B suppose. तो आप पहली बार इस रास्ते से गए, अगेन आप स्टार के वजह से आप घूम के आगे, now you are following this path. B, फिर से आप लूप में घूम गए, अगेन you are following this B वाला पाथ. ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब कि A, B, B will be an allowed input stream for this kind of regular expression. In fact, आप चाहो तो यहाँ पे A, B, B, A ऐसा भी कर सकते हो. B, B, A also allowed. In fact, double A, only single B, this is also allowed. So these are some various input string cases specify using this kind of regular expression. Okay, so पहले बार में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा था क्योंकि this series you cannot break. ये जो series है मतलब some ordering is predefined. That predefined order you cannot break. Okay, so this was the mistake I have told. I mistakenly I told that a single A is allowed, but no, because if you think in a diagrammatic fashion, you cannot break this chain. They are connected with each other. And if you want to reach from your present state to final state, and if you use this asterisk also, asterisk means you have a loop. Okay, R is star, then you will have to every time follow R followed by A. So any combination of RS can come in multiple options, but only R or only S is not possible. Okay. Just wait for a second. Okay. So any doubt in this part? Anybody is having? Why I told that these input strings can be generated? Anyone is having any doubt? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Any doubt? Who said yes, ma'am? कोई doubt है आपको? Yes, ma'am. अगर doubt है तो पूछो. ना मैम कोनो डाउट नहीं. Next, the last thing I told about R oblique SS. So I think that is also clear to all of you because यहाँ पे भी हमें SS मतलब double occurrence of S को लेना है, मतलब double occurrence of B को लेना है. I write R oblique SS will start. So इसका मतलब either this R can be null, in that case double S will occur, or this double S can be null. So in that case only R can come, और दोनों ही null, वो तो allowed है ही all the time because you are dealing with the key enclosure. So definitely then your one of the member will be epsilon, that is for final. और यहाँ पे oblique allowed है. So oblique allowed है मतलब either of your first term or your second term. Any one can be omitted at any time. So if your second term is omitted, then single R मतलब single A is allowed. या फिर आपका फर्स्ट टर्म ही ओमिट हो गया, सिर्फ सेकेंड टर्म अवेलेबल है, सो योर डबल बी इज अलाउड, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ
both of them. So A B B दोनों ही सिंगल ऑकरेंस है, ए भी है, बी भी आ सकता है, या फिर डबल ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म और सिंगल ऑकरेंस, सो डबल ए डबल बी, दैट इज अलाउड, या फिर आपका फर्स्ट टर्म का सिंगल ऑकरेंस, देन सेकेंड टर्म का डबल ऑकरेंस ए 4b, that is also allowed. Okay, so likewise, by looking at the input string, you can generalize this regular expression also. Okay, so in your question, how that this will come, maybe input string will be given to you and you will be asked to write its language, और vice versa, जैसे मैंने देखा कि आपके पास language दिया हुआ है and you will be asked to create its possible input strings, which can be specified by these types of regular expression. Understood? Any question in this part? Hello? No, ma'am. So then, if you do not have any doubt, then I am winding up the class by taking your attendance. Download it, then you leave the class. Yes.